हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हम। हमारा NIACL AO न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसमें जो हमारा इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था 23 फरवरी इन न्यू दिल्ली। उसके 4 ही जगह इंटरव्यू होते हैं और बहुत सीधी सी बात है कि होटल में ही हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, फर्स्ट पॉइंट जिस पे मैं खुद ऐसे थी कि अच्छा ये ऐसे होने वाला था, तो वो है कि ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑफलाइन नहीं था। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑफलाइन, क्योंकि SBI का, IBPS का, सबका ऑफलाइन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका भी ऑफलाइन होने वाला है। सो आई वाज mentally prepared according to that, and when I saw it online I was little bit अब मज़ा नहीं आएगा करके। That's the point. You should keep it in mind that you should be prepared for any circumstances. कैसा भी इंटरव्यू ले, आपको ना मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, कैसा भी होगा देख लेंगे। आई वाज लाइक हाँ, ऑफलाइन होगा देख लेंगे। ये नहीं था कि ऑनलाइन भी हो सकता है। आई वाज नॉट इन दैट स्टेट। तो मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ की वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि यार अब तक एक्सप्रेशन भी नहीं दिखेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बिल्ड दैट नाइस करेक्शन दैट यू कैन बिल्ड इन अ फिजिकल और ऑफलाइन interaction, because all the interviews are generally interactions, and if it goes like an interaction, like an interaction, so it is going to be a little bit better. You are going to get a little more marks, as much as I could understand. कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती है ना, तो बहुत क्लेम नहीं कर सकते कि चीज़ों पर नहीं ये ऐसे ही होगा। चलिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये है कि अब हम जब एंटर किए तो सबसे पहले हुआ गए, मुझे होटल में आइडिया ही नहीं था, तो वहाँ पे मतलब किधर है उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड। बट थैंक्स टू देम उन्होंने मुझे ऐसे रास्ता दिखाया। एक सर ने, ही वॉज वेरी मच ऑफ आर एज, राइट, उन्होंने मुझे बिल्कुल रास्ता दिखाया। मैं जाके उस हॉल के सामने छोड़ा ऊपर जाके, सो दैट आई फाइनली रीच द डेस्टिनेशन वेयर आई नीडेड टू रीच। ओके, देन जब हम अंदर गए, सबसे पहले हम बैठ गए, हमने वेट किया। डीवी हुआ, डीवी में आपके उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। मेरे पास डिग्री नहीं थी तभी, अभी है, तभी नहीं थी। उन्होंने बोला डिग्री चाहिएगी, अभी आपका प्रोविजनल है, ये चल जाएगा, लेकिन अगर आपका होता है, हाँ, क्योंकि वो हर किसी से यही बोलेंगे, अगर आपका होता है तो आपको डिग्री चाहिए, चाहिए ही चाहिए करके। ठीक है, वहाँ पे वो मैम थी, उन्होंने मुझे बोला ऑल द बेस्ट बेटा। दूसरी मैम थी, उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट ऐसे करके ना। सर थे जिन्होंने OBC का सर्टिफिकेट और वो सब कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे बोला ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करना, ऐसे करके बोला 4-5 लोगों ने। हाँ, तो इट फील्स गुड, ऐसे ऐसे करके ना, इट फील्स गुड, टिंग 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 टिंग। क्योंकि क्या, पिताजी गए थे, पिताजी नीचे रह गए, बट you need all the best, at the last point of time. मैं बार बार मास्क नीचे कर रही थी, सो आई कैन कंट्रोल माई ब्रीदिंग, अदरवाइज आई वॉज गेटिंग शिवरिंग, और ऐसे पैनिक मोड में आ रहा था। थोड़ा सा इंटरव्यू की वजह से होता है, ऐसे ऐसे आपको खुद से होता है, बट बाकी जो होता है ना, फिर वो मास्क है, उससे AC के बाद भी ना ऐसे ऐसे गर्मी गर्मी हो जाती है। ठीक है, वहाँ से हमें ऊपर लेके गए, हम ऊपर गए, फिर एक बंदी का चल रहा था, नेक्स्ट लाइन में थी, थर्ड पर्सन मैं थी। मेरे बाद तो ऑब्वियस और लोगों का भी था ही, दैट्स वेरी मच ऑब्वियस। मेरे 4th या 5th नंबर पे स्टार्टिंग में इंटरव्यू था, फर्स्ट स्लॉट में था मेरा। ठीक है, तो देन वहाँ पे वेट कर रही थी मैं, वहाँ से गए, उधर वेट किया। जैसे ही उन्होंने, बहुत टाइट डोर था, उन्होंने ऐसे करके गेट खोला ना, तो मुझसे तो खुला नहीं, वो सर ने खोला। एंड आई वाज लाइक हैं, खाली पड़ा। वो मेरे एक्सप्रेशन थे ना, वो भैया समझ गए, वो जो सर थे ना वहाँ पे, समझ गए। वो बोलते मैडम इधर। उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया, किस साइड में, वहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई थी ना, स्क्रीन साइड पे उन्होंने मुझे गाइड किया। देन आई गॉट इट। ओह, तो मैंने ऐसे देखा, लिटरली ऐसे देखी ना, ओह आई वाज लाइक ओह ऐसे है, ऐसे वाला एक्सप्रेशन। हाँ, वो तो नहीं किया था मैंने, बट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसा आता, ओह ऑनलाइन है, ऐसे वाला। ठीक है, तो आई शायद वो समझ गए थे। मैंने सबको विश किया। चेयरमैन सर थे, 3 और पर्सन थे। ठीक है, टोटल 4 लोग थे पैनल में। चेयरमैन सर ऊपर थे, नीचे लिखा हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि चेयरमैन सबके नीचे गेस्ट लिखा था, नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखा था शायद सबके नीचे, नेम नहीं था किसी के नीचे। ठीक है, और इस साइड में, इस ब्लॉक में, इधर जैसे इधर मैं, ये स्क्रीन इधर मैं दिखती हूँ, इधर चेयरपर्सन, और नीचे 3 लोग, 1 2 3 ऐसे स्क्रीन डिवाइड थी, उनका आइकन्स छोटे थे। चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछना शुरू करने से पहले उन्होंने पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल इन टॉकिंग विद अस। सो आई सेड सर,
I'm joyous as well as I'm nervous right now. तो उन्होंने बोला now it's good yet, it's good because he has seen the name and they have the name. So he said it's good Yeti to have butterfly in your stomach. It has good impression at times. So I thought like it should go nice. Fingers crossed. Okay. ये हुआ then उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि अब गिव मी योर इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इन दोनों में से कुछ एक क्वेश्चन पूछे तो मतलब ये था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करके। फिर मैंने बताया, नेम से ही स्टार्ट किया ऑब्वियस, क्योंकि योर सेल्फ बोला था, यति इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऐसे नहीं बोला था, यति टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऐसे नहीं बोला था। तो आई स्टार्टेड विद माई नेम, क्योंकि अगर वो यति क्वेश्चन में डाल देते देन आई वुड हैव स्किप्ड माई नेम। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा उसको। मैंने बोला कि मैंने ये मेरा नेम है, मैंने यहाँ से सारी एजुकेशन करी है, ये मैंने एजुकेशन में किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने शायद एक चीज़ और बताई, देन आई वेट, क्योंकि ऐसा होता है इंट्रोडक्शन में ना आपको सर्टेन टाइम होता है, बट वो टाइम क्या होता है कि वो बंद कर देते हैं, बहुत बार बंद कर देते हैं इन द सेंस कि वो आपको बीच में रोक देते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक पॉज लिया जहाँ मुझे लगा था कि इसके बाद ही मुझे रोकेंगे, नहीं रोका। सो आई कंटिन्यू। फिर मैंने मेरी हॉबीज़ बताई, हॉबीज़ को बताया कि डांसिंग है, राइटिंग पोएम्स है, आई लाइक टू सिंग ऑल्सो, whether somebody likes it or not, I mentioned it. Whether somebody likes it or not, I like to sing it for myself. There could be a possibility that somebody will not like my song, but I like to sing for myself. So they were like, okay, okay. Then they were still listening. You know, उसको बोलने के बाद I was like, अब क्या बोलूँ मैं, इतना तो हो गया, इतना ही इंट्रोडक्शन सुनना पसंद करता है ना कोई। I was like, इतना ही इंट्रोडक्शन सुनना पसंद करता है। Then I took the pause, but they didn't ask me to stop. I was like, मैंने बता दिया वैसे ब्रीफिंग सब, अब नाउ यू कैन नॉट गो बैक एंड टेक द टॉपिक एंड स्टार्ट डिटेलिंग दैम, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आई सेड बस देन आई डिड नॉट टेक इट, आई गेस आई टेक इट फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो। आई एडेड फ्यू मोर लाइन्स कि अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत पुराना हो गया, तो मैंने वो लाइन्स उसमें ऐड करी। उसके बाद मैंने फिर वेट किया, स्टिल दे डिडंट आस्क मी टू स्टॉप, बट आई स्टॉप दिस टाइम। वहाँ पे आई फील हो गया होगा टाइम ईजिली ना, but they were very much I should say patient, they were listening it very patiently. Okay, so that's very nice. But then I stopped, then I did not utter any word. So chairman sir, then he noticed, then he said okay. Why he said okay? Because they were thinking that I will keep saying on and on and on, but I kept it a little bit crisp. I didn't go in details. I wanted to keep it crisp, because the more you will speak, the more they will ask the question from it. But yes, I guess I would have spoken more than 2 minutes for my introduction, because they wanted me to speak, so I spoke. Okay, then sir ne question start kiya. Okay, let me tell you this thing. I was replying each and every answer in English, and they were asking, means chairman sir asked me all the questions in Hindi, I answered them in English. Then the second sir, he asked me every question in English, because I guess he was not very comfortable with Hindi, because his accent and gestures and tone seemed me like he belongs to South India. So he was very much comfortable about English only. Okay. Means I'm not saying others are not comfortable. Obviously, everybody was comfortable very much. But yes, I'm saying that I continued speaking in English. They were asking questions me in Hindi. So why I like to go it this way? You can do it like when they are asking question in English, you can reply in English. When they are asking question in Hindi, you can reply in Hindi. That's also nice. Some people say to do this, but I prefer that if I have picked any one language for myself, so I will stick to that, because when they are changing the languages and you are getting the question and reverting them, that means simply you know the language and you understand the question, and that's why you are able to reply. So both the languages, also this way also you can simply show that you know both the languages, whatever you have written there. Okay, so I adopted this method for SBI PO, and for NIACL I continued the same. Okay, then sir asked me question regarding my hobbies first. He asked me question from singing, which singing, when you learned, okay, how much, Hindustani or Karnataka. Then I say Hindustani, then he didn't ask question further.
this much question he asked from the singing. Then he asked questions from dance. He said, which dance form? I said Kathak. So he asked, are you trained? I said, yes, sir. Then he keep on going. What's the difference between Kathak and Bharatnatyam? I mentioned major points. Then he was listening very patiently. So I mentioned major points because what happens, you can go in details and you can carry on with the details because there are lots of differences and similarities are also there, but lots of differences are also there. So if you are coming to explain the differences, it's going to take 5, 10, 15 minutes, whatever, depend on how much you want to explain. So sir was, when I stopped, sir didn't ask any questions. So I said, shall I explain it further, sir? Sir, shall I explain it further? So sir said, no, it's good enough. Because I thought when he was listening, he wants to see me speaking more. So I directly asked. Because I explained 5 to 6 points, I did not explain. I just point out 5 to 6 areas where it is different, but I did not elaborate them. And then I assumed when he didn't ask me next question that he wants me to elaborate that. So I asked. Okay, sometimes it's good. I feel it's good to ask directly. Then sir said, no, it's good enough. Then he asked me that two Kathak dancers and two Bharatnatyam dancers name. Then he said, no, only one Kathak dancer and one Bharatnatyam dancer. Name you tell me. Okay. Um, then uh, then I told Kathak dancers name, 4, 5, maybe more than that Kathak dancers name. I told them. Then he said, "What about Bharatnatyam?" And I'm telling you because why I could not recollect any name because I was not comfortable. I was in a state like why it is online. I was in a state of mind that why it is online. So that when I came back now I was thinking what kept me back. What kept me back at certain points when I could not recollect certain things. So that was I was not expecting it to be online and it happened online. That was the reason. Okay. Then I say, sorry, sir. He gave me any other, but every time he asked me, I keep telling him the name of Kathak dancers. Okay. Then he said, okay, fine. Then he asked me one more question that who did first ever, who was the first ever person who performed Kathak or who did Kathak. Then I explained what we have studied. Then he said, Beta, now tell me the name of the person in India. So I said, sorry, sir, because um, that point of time I couldn't recollect. So he keep asking. Then he come to this Bharatnatyam question. Then he asked the states of the classical dances. How many classical dances? I said this. So he asked, keep on asking, where does Kathakali belongs to, where this dance belongs to, like this. He started asking the questions. Okay, fine. I gave one question, one state wrong for that Kuchipudi, but instantly he gave me the next classical dance name that belongs to that state. And as he said the name, I said, sorry, sir, I need to correct myself. This dance belongs to this state and this dance belongs to this state. Then he said, now you got it. Because prior to that, he also asked 3, 4 classical dances with their states, but I mistaken only one. So he asked another one. Then he dropped this question, and then he came to what your father do, what your mother do, how many siblings. And when he said how many siblings, so I give 3, 4 line brief answer with this about sibling, how many siblings, I'm third sister, and so on. So within my 3 to 4 line, all the sibling questions were covered. So sir was asking another question from the sibling area, and then he stopped. He remembered the answer and means he maybe got it that yes, what I'm about to ask, she has already told me. Okay, so there were that's also, and then he asked me, you have done so many things, but पर यदि पर ऐसे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे आओगी तो तुम्हारी सारी एजुकेशन जो है वो तो बेकार हो गई है, वो तो किसी काम की नहीं है, तुमने पढ़ा कोर्स था तुम किसी स्ट्रीम में, वो तो किसी काम का नहीं है. ओके, एंड उसके साथ और इंश्योरेंस ही क्यों, वाई इंश्योरेंस. So I answered both of the question and he seemed to be satisfied. He didn't cross question that area like what happened in SBI. Ma'am cross questioned and checked my confidence. Okay, but there sir did not check, did not do cross questioning. He finds, and I felt
at that time that he was very much like, okay, fine, answer is good. I have no issue with these answers. Okay, because whenever you have some issue, you will go with the cross questioning sometimes. So even when you don't have, you just want to check the other person's stability or level of the brain, what they are thinking. For that, you also go for the cross questioning. Okay, then I guess, this many question, maybe one or two question, maybe I'm missing it out. No, I'm not missing it out. I have taken all the question. Then the second sir, he was also there. That I said, no, the South, maybe he belongs to South. Maybe I'm saying, I'm not very sure. So maybe he belongs to South. So sir has started all the static question he asked me. He said, what is the capital of Ukraine? Bordering countries, Ukraine. Okay, okay. Then next. One more question. Jai Jawan, Jai Kisan. Who gave Jai Jawan, Jai Kisan? Let me tell you. When they were throwing, when he was throwing the static question, I was um, in a state of, I was expecting it to be somewhere banking, insurance, that sort of question. I was not thinking of static. They will ask me directly all the static, back-to-back static questions. But I replied, and even bordering countries of Ukraine, I was not able to recollect, though I am watching every video, whatever is coming there regarding Ukraine, and every update I do have, but it didn't click me. All the countries that clicked in my head all belongs to the border of Russia. All were the bordering country of Russia. So I said, sorry, sir, I couldn't recollect. Jai Jawan, Jai Kisan, I gave it the wrong answer. Then chairperson sir gave me hint. Yati first three letters are correct. Now you keep on thinking they have given me 30. You easily think they have given me time, because I don't feel I have given earlier any wrong answer, because if I have given, I have corrected myself, or I have said, sorry sir, I don't know. I was not boasting all around that just this. I guess it helps also, because that gives you that makes a positive image of you, like this person is not going to boast about the things, so that could be a good thing. Then what happened actually, nice na? So then sir gave me hint, and I was like, because I knew, sir ने बोले you're very close yet, you're very close, just try. Then सर के हाथ में ऐसे कोई शीट थी, मुझे दिखा के ऐसे बोलते हैं, देखो मैंने तुमको ऐसे आंसर दिखा के ऐसे नीचे कर दिया, मीन्स क्विकली ऐसे करके ना मैंने तुमको आंसर दिखा दिया पूरा, अब तो बता दो। सर बोलते मैंने तुमको हिंट दे दिया, एंड आई वाज लाइक, फिर मैंने दिया उसका आंसर, फिर ठीक था, बट मुझे ना वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो थोड़ा सा लेट क्लिक किया, मीन्स सर हिंट जो दे रहे थे ना, वो हिंट एकदम से मैंने कैच नहीं किया। फिर जैसे सर ने एक दो लाइन और बोली, देन आई गॉट इट, देन सर कही यस अब ठीक है। सो सर मतलब आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड इतना आपको एकदम से अच्छा वाला आइडिया आता है। ओके, उसके बाद दो क्वेश्चंस और पूछे थे अवार्ड से रिगार्डिंग, नोबल और किस किस को मिला।